Ashutosh continues to be with us. Ashu, what are you hearing from the site of the demolition? You're in touch with the engineers, the blast experts as well. Police personnel going to be deployed very, very shortly. What's the latest from the site? Well, Shiv, the final checks have been done and connection is required. It's a high potential battery that will be fixed with the detonator, and that will be done only at around 2 o'clock. Yesterday evening also the final checks were done from the basement to the top, the 32nd floor. So all connections have been done, only there the battery is right much here, and the team expert is analyzing, and they're taking just a walk around the structure and also the outer periphery of the structure, because the safety measures that they have taken is going to be really precision that will take place, and it is a calculation, mathematics, physics and modern engineering, and that marvel will ensure a waterfall moment of this entire structure, and the building has to behave the way it is designed to behave, as the experts have been telling me, because they have the expertise. They have carried out such demolition with the implosion in several countries. Last expertise that they had was in Johannesburg, when 108-meter tall building was collapsed, and again the building that they had to prevent it, the distance between them was far less than this particular structure. Now, as they believe that there could be PPV, the particulate velocity of these particles upon the explosions, right? When those curtains, that white and black curtain that you see, those are the geosynthetic cloths, and the only aim that they are fixed with that is to prevent the particles from flying with the sharp velocity. In India, the PPV velocity which is permitted is 35 kmph. What experts have been telling me, that those particles, even if they move out, they will have the maximum velocity of 30 kmph. So this is not really going to be harming the structure, or the flying materials will not really go too far. Though the biggest concern is about the structure, the dust that will be flying. At the moment, the wind speed is around 20 kmph. If it grows further, more likely the dust will fly further in the air, too far long areas. But to contain that, those preventive measures also being done. At around 2 o'clock, the battery will be affixed with the final collection. 2:30 p.m. sharp, button will be pressed. From the basement to the top floor, it will take 7 seconds for entire structure to burn down, and then within 12 seconds, everything will be grounded. Shiv. Remember, the most important people today are the residents of Emerald Court, those who fought against these twin towers for 10 long years, painful years. Many of the people still haven't been compensated. The home buyers who've been victims of this terrible corruption, many of them still haven't received justice. Their plans ruined, their futures ruined, and the people who live in the colony right now who fought against this, how they've been preparing. Aishwarya sent us this report. Let's never forget that it's their lives that have been affected. It is in the shadow of these two towers that they have existed for the last 10 years, in suspense, in turmoil, wondering how to plan their lives. And that's why their views, their plans, their preparations are more important than anything else today. Listen into this report that Aishwarya got us. महज 24 घंटे में ट्विन टावर ध्वस्त हो जाएंगे। नोएडा के अंदर उनका नाम और निशान नहीं रहेगा, लेकिन क्योंकि ये रिहायशी इलाका है तो उन बिल्डिंगों में, वो बिल्डिंग जो महज 20-30 मीटर दूर है ट्विन टावर से, वहां के लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए, अपने घरों की सुरक्षा के लिए इंतजाम कर लिया है। लोगों से ही जानते हैं उनके दिल में दुगदुगी है या नहीं और क्या चाहते हैं। कल जब 2:30 बजे के बाद 10 सेकंड में बिल्डिंग गिरेगी, उसके बाद शाम को क्या वो अपने घर वापस आना चाहते हैं या थोड़ा इंतजार करना चाहते हैं। आप लोग सब यहीं रहते हैं, आप लोगों ने अपने अपने घरों को बचाने के लिए क्या क्या किया? थोड़ा बहुत हमने अपनी बालकनीज को कवर किया है, अपने एसीज को कवर किया है, थोड़ा सा कुछ विंडो पे प्रोटेक्शन लगा देंगे, अपने टीवी और जो ब्रेकेबल ग्लासेस की पेंटिंग्स वगैरह हैं उनको हम बेड पे रख देंगे, और बस ये। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि ऑर्डर ऐसा आएगा कि बिल्डिंग ही गिरा दीजिए? उम्मीद थी? नहीं, ऐसा तो किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये जरूर था लोगों को कि इससे रिलीफ मिलना चाहिए, और जिस तरह से गलत कंस्ट्रक्शन हो रहा है, गलत जगह पर हो रहा है, वो चीज़ होना नहीं चाहिए। हालांकि एक देखा जाए तो बहुत ही अच्छा सबक है सभी के लिए कि गलत काम जब भी करोगे तो उसका परिणाम बुरा ही होगा। क्या आप लोगों के दिल में थोड़ी दुगदुगी है? क्या पता कल शाम को अगर वापस आए तो यहाँ पे क्योंकि मलबा जो गिरेगा उससे ये तो बात निश्चित है कि बहुत सारा जो डस्ट है वो बहुत ज्यादा उड़ेगी, और हो सकता है कि कुछ घंटों तक यहाँ पे डस्ट ही हो, तो उससे थोड़ा सा घबराहट है।
लगता है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होगी, बहुत ज़्यादा डस्ट आएगा। मोस्टली जो एस्थमेटिक पेशेंट हैं या जिनको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है उनको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमने बचाव के लिए काफ़ी कवर किया है, बट डस्ट की प्रॉब्लम तो हो सकती है। डस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोगों को क्या ऐसा लग रहा था कि जो जिस तरीके का वर्डिक्ट आया ऐसा वर्डिक्ट आएगा, और जब टावर गिर जाएगा उसके बाद प्लान क्या है? कुछ पार्टी वार्टी करने का प्लान है? हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल सब मिलके एक साथ पार्टी करेंगे हम लोग। हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा है कि ऐसे करप्शन रोका जाता है। हाँ, करप्शन रुकेगा ना, नहीं तो आगे पता नहीं ऐसे कितने करप्शन होंगे, तो लोग डरेंगे अब ऐसे। दूसरे बिल्डर्स को भी इससे सबक मिलेगा। करप्शन का रावण और कुंभकर्ण का दहन होगा कल 2:30 बजे, आप जरूर देखने आइएगा। और कल शाम का प्लान क्या है आप लोगों का? भगवान सब कुछ ठीक ठाक करेगा और कल शाम की चाय हम अपने घर पे पियेंगे। बहुत प्रोफेशनली मैनेज्ड है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और तो शाम की चाय के लिए आप तैयार हैं अभी से? अच्छा, और शाम की चाय हम अपने घर पे पियेंगे। शाम की चाय घर पे पियेंगे। और सुबह यहाँ से निकलने का इंतजाम कितने बजे आप लोग? 7 बजे हमें इवैक्यूएट करना है। उसके कुछ गाइडलाइंस हैं, उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, वो प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए हम 7 बजे से पहले ही घर छोड़ देंगे। और 4 बजे जा कहाँ रहे हैं? कहीं आसपास ही जा रहे हैं? हाँ, ऐसे ही हम कुछ दिल्ली में घूम लेंगे। सोसाइटी में अरेंज किया है, वहाँ पे आप लोग जा रहे हैं। लेकिन उम्मीद यही है कि कल शाम की चाय आप लोग सब साथ बैठकर अपनी अपनी बालकनी के अंदर पियेंगे। पूरी उम्मीद यही है, पूरी उम्मीद यही है। तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनकी उम्मीद यही है कि कल 2:30 बजे जब एक बार ट्विन टावर ध्वस्त हो जाएंगे, उसके बाद शाम की चाय अपने अपने घरों में पी जाएगी, एक साथ पी जाएगी। और उम्मीद की जा रही है कि इस बिल्डिंग के गिरने से इनकी बिल्डिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कैमरा पर्सन दरबील सिंह के साथ ऐश्वर्या पालीवाल।